Today we are going to start a very important topic, that is corrosion. As it is very common name that you have heard in your surroundings. Corrosion ये एक ऐसा नाम है, कॉमन नाम है, जिसमें आपने कभी ना कभी जरूर सुना होगा. ठीक है, ये corrosion जो होता है ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है हमारे कंट्री के लिए. ठीक है, और अगर corrosion है ना स्टार्ट हो जाए तो क्या होता है कि मेटल जो है वो क्या करता है, अपनी प्रॉपर्टी को लूज कर देता है. क्या करता है, प्रॉपर्टी को लूज कर देता है. जैसे कि हमने पढ़ा है कि मेटल में बहुत सारे अच्छे प्रॉपर्टी होते हैं, जैसे मैलिनिटी होते हैं, डक्टिलिटी होती है, सोनरस होता है मेटल, साइनेस होती है मेटल में. ठीक है, लेकिन क्या होता है कि इन्वायरमेंटल रिएक्शंस के कारण, मतलब इन्वायरमेंटल में जो भी गैसेस हैं, ठीक है, उनसे क्या करता है, जैसे ऑक्सीजन के साथ क्या कर रहा है, मेटल रिएक्ट करता है. तो अगर ऑक्सीजन के साथ मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, और इसके कारण क्या होता है कि हमारा मेटल कोरोड हो जाता है. मतलब मेटल जो है हमारा खराब हो जाता है. ये इसे हम $1 बिलियन के लिए कहीं कहीं कहा जाता है. क्यों? क्योंकि इसके कारण बहुत सारा लॉस जो है कंट्री को फेस करना पड़ता है. क्योंकि मेटल के कारण क्या होते हैं, कोरोजन के कारण क्या होते हैं कि बहुत सारा मेटल के जो मशीन है वो क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं. जैसे मैं बात करूं कि अगर आप किसी पाइपलाइन कंपनी में हैं, ठीक है, और अगर पाइपलाइन कंपनी में क्या हो जाए कि अगर पाइप करोड हो जाए, तो आप समझ सकते हैं कि पाइप करोड होने के कारण कितना हैवी एक्सप्लोजन हो सकता है, और उस हैवी एक्सप्लोजन के कारण कितनी जाने जा सकती हैं. सो इसलिए हम समझ सकते हैं कि कोरोजन को पढ़ना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, और कोरोजन को समझना या फिर जानना कितना इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज कोरोजन. कोरोजन होता क्या है, तो आप इसे ये कह सकते हैं कि द लॉस ऑफ मटेरियल, the loss of material. ओके, आप इसे कह सकते हैं the loss of materials like metal alloy, metal and alloy. The loss of material like metal alloy or its usefulness property or its usefulness property. Okay, usefulness property. Okay, as we have discussed that metals have lots of useful property, like it has malleability property, ductility property, malleable, or metals are malleable, metals are ductile, metals are sonorous in nature. So these are the properties of metal, but it loses its property. Why it loses its property? It loses its property due to chemical reaction, due to electrochemical reaction or chemical reaction with its environment. Okay, so such type of deterioration of metal is known as corrosion of metal. So we can say that the loss of material like metal and alloy or its usefulness property which it loses. Why it loses? It loses which it loses due to electrochemical reactions, due to electrochemical reaction with environment is known as corrosion. बेसिकली आपको कोरोजन अब समझ में आ गया होगा कि कोरोजन होता क्या है. तो कोरोजन जो है बेसिकली एक ऐसा प्रॉपर्टी है,
ठीक है। कोरोजन मतलब क्या है कि मेटल की वो प्रॉपर्टी, जैसे मेटल क्या करता है कि अगर वो जैसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, जैसे आपने एक पढ़ा होगा रस्टिंग ऑफ आयरन, ये कोरोजन का बहुत बड़ा एग्जांपल है जिसे आप समझ सकते हैं। जैसे आपने पढ़ा है कि मेटल जो होते हैं उसमें बहुत सारे क्वालिटी है, बहुत सारी प्रॉपर्टी है, लेकिन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन मैं आपको बता दूं कि जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है तो हमारे पास जो मेटल होता है, हमारे पास जो आयरन जो होता है उसमें क्या हो जाता है, इसमें जंग लग जाता है, और आयरन जंग लगने के कारण क्या होता है, खराब हो जाता है। तो आयरन आखिर जंग कैसे लग जाता है, हम इस बात को समझते हैं। जैसे कि अगर आपके पास, मैं बात करूँ कि अगर आपके पास ये एक नेल है, ठीक है, और अगर आप इसे आप मार्केट से नया लेकर के आते हैं तो आपको पूरा वीडियो दिखता है, उस पर आपको किसी भी प्रकार की कोई ट्रेसेस नहीं दिखते हैं। लेकिन जब आप उसे एटमॉस्फेयर में छोड़ देते हैं कुछ समय के लिए, तब आप उसमें देखते हैं कि वहां पर एक ब्राउनिश लेयर आ गया, और ये ब्राउनिश लेयर क्या करता है, धीरे धीरे इसे कोरोड कर देता है, ठीक है। और ये जो है ये मेटल के ये कोरोड कैसे हो गया, तो कोरोड हो गया किसके कारण, तो हमारे एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर है उसके कांटेक्ट में आने के कारण, हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसके कांटेक्ट में आने के कारण ये क्या हो गया, कोरोड हो गया। और बेसिकली यही क्या है, यही तो है हमारा कोरोजन। So what is corrosion? We can say that the loss of material or its usefulness property which loses, मतलब कि the loss of material जैसे कि मेटल और alloy, उसमें जो भी यूजफुलनेस प्रॉपर्टी है जो कि वो लूज कर देता है, वो खो देता है। क्यों खो देता है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद एनवायरनमेंट, क्योंकि उसका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन होता है एनवायरनमेंट के साथ, और इसे ही हम क्या कहते हैं, कोरोजन कहते हैं, ठीक है। इस कोरोजन के कारण क्या होता है, हमारा मेटल का क्या होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। ड्यू टू दिस डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल टेक्स प्लेस इवन नाउ देयर वेरी नेचुरल फेनोमेना so which affects our environment. It is one of the environment which it is one of the factors that also results in corrosion. Okay, so we have to care about corrosion because we know that we have to face many problems, we have to face lot of problems due to corrosion. So it is our responsibility to know about corrosion. So it is the most important chapter in engineering chemistry to learn about what corrosion is and how we can protect it. So in this chapter we will discuss about what is corrosion, what are the consequences of corrosion, and now after that we will know about classification of corrosion. And after the classification we are going to discuss about only one topic, that is our dry corrosion. Okay, so basically you can understand what is corrosion. The loss of material or its usefulness property which it loses due to electrochemical reaction with environment is known as corrosion. Okay, so now we will going to about examples of corrosion. So we will know about examples of corrosion, and after that we will know about consequences of corrosion. Okay, so ये हमारे पास corrosion का एक और definition है, और इसे हम एक और सिंपल लैंग्वेज में डिफाइन कर सकते हैं। corrosion बेसिकली है क्या, तो corrosion जो है वो है हमारा बेसिकली डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर ड्यू टू इट्स एनवायरनमेंट, ड्यू टू रिएक्शन विद एनवायरनमेंट और ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन विद द एनवायरनमेंट। मतलब corrosion बेसिकली है क्या, corrosion बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैटर अपने प्रॉपर्टी को लूज कर रहा है, ठीक है, और corrosion के कारण क्या देखते हैं कि डिस्ट्रक्शन ऑफ मैटर को देख पाते हैं। सो व्हाट इज corrosion, वी कैन आल्सो डिफाइंड एज corrosion may be defined as corrosion may be defined as slow and continuous destruction of slow and continuous destruction of metal or alloy due to electrochemical reaction with its environment, okay, due to corrosion metal
loses its property like ductility, okay, or much or the property which metal have, and it leads to corrosion. हम इस सिंपल लैंग्वेज में corrosion को समझ सकते हैं कि ये क्या है, ये एक स्लो और कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन है मेटल का। ये क्या है, ये स्लो और कंटिन्यूअस डिस्ट्रक्शन है, मतलब एक स्लो प्रोसेस है और ये जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूअस होते रहता है, ठीक है। एक दिन में corrosion नहीं हो जाता है, corrosion होता है धीरे धीरे होते रहता है। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है और ये क्या करता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ मेटल, मतलब मेटल को खराब कर रहा है, मेटल को डिस्ट्रक्ट कर रहा है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट के साथ इसका इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल रिएक्शन होता है और इसके कारण मेटल अपने प्रॉपर्टी को, जो भी इसमें यूजफुलनेस प्रॉपर्टी है, उसको ये क्या कर रहा है, उसको ये लूज करने का काम करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम लिख सकते हैं, वी कैन से दैट एज ए एग्जांपल वी कैन टॉक अबाउट रस्टिंग ऑफ आयरन। सो इन रस्टिंग ऑफ आयरन व्हाट हैपेंस when a piece of iron is exposed in air for a long time, then what happens, we have to talk about it. आपने कभी देखा होगा कि when a piece of iron is exposed in air for a long time, okay, then what happens, then a brownish layer is formed on iron piece. Why? And this is, we called it rusting of iron, and it is also corrosion, and it is also, what else it is, it is also corrosion. So we can say that corrosion is basically what we can say that as an example, rusting of iron. In rusting of iron what happens, when a piece of metal is exposed in air for a long time, then a layer of reddish scale is formed on iron piece. Okay, is formed on iron piece. Okay, so we can say that, and powder of Fe3O4 is formed. Okay, and it is due to corrosion. देखिए, जब आप किसी मेटल पीस को आप क्या करते हैं, एयर में लंबे समय तक रखते हैं, तो आप ये देखते हैं कि इस पर क्या होता है, इस पर एक रेडिस स्केल का फॉर्मेशन होता है। आयरन पीस पर क्या होता है, एक रेडिस स्केल का फॉर्मेशन होता है और ये फॉर्मेशन क्या करता है, ये जो फॉर्मेशन है इसके कारण क्या होता है, हम कहते हैं कि आयरन की क्या हो गई, आयरन की रस्ट हो गई, आयरन रस्ट हो गया। ठीक है, जब हम देखते हैं कि ये जो रस्टिंग होती है, ये भी क्या है, ये भी कोरोजन के कारण ही होता है, क्योंकि इसमें होता क्या है कि हमारे पास जो आयरन का मेटल है वो भी क्या करता है, हमारे जो ऑक्सीजन में जो मॉइस्चर है उसके साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। जैसे हम इसलिए ये कहते हैं कि जिस जगह पे मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होता है, अगर हमारे पास जिस जगह पे एयर में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा है वहाँ पर रस्टिंग होने के चांसेस भी क्या आते हैं, बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो रस्टिंग ऑफ आयरन है वो भी क्या है, कोरोजन का एक प्रॉपर्टी है। और हमें ये बात पता है कि रस्टिंग ऑफ आयरन के कारण हमें कितना सारा लॉस फेस करना पड़ता है। जैसे अगर आपके पास कोई आयरन का पीस है और अगर आप उसे रख करके बहुत दिन तक छोड़ देंगे तो आप उसमें देखते हैं क्या हो जाता है, रस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे बहुत सारी इंडस्ट्री में अगर किसी कारणवश अगर इंडस्ट्री को क्या कर दिया जाए कि बहुत समय तक
बंद कर दिया जाए, ठीक है। तो इससे क्या होता है, तो इससे जो भी मशीन है वो क्या हो जाते हैं, जो भी मशीन है वो क्या हो जाते हैं, रस्ट हो जाते हैं। तो ये जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे क्या है, जिससे हमें बचना है। दूसरा जो है हमारा वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। दूसरा क्या है, फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर। जैसे अगर आपके पास कॉपर है, ठीक है, और अगर आप उसे मॉइस्ट एयर में बहुत लंबे समय तक के लिए रखते हैं, अगर आपके पास कॉपर है, ठीक है, और अगर आप उसे एयर में रखते हैं, मॉइस्ट एयर में बहुत लंबे समय तक रखते हैं, तो आपको एक ग्रीनिश लेयर दिखाई देता है, ठीक है। तो ये जो ग्रीनिश लेयर है ये भी क्या है, ये भी एक प्रकार का कोरोजन ही है। सो वी कैन से दैट फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म, फॉर्मेशन ऑफ green film on surface of copper. Formation of green film on the surface of copper. So we can say that a green layer of basic carbonate, a green layer of basic carbonate consisting of CuCO3 parallel to COS, consisting of CuCO3 and CuOS2 कॉपर हाइड्रोक्साइड। ओके, एक ग्रीन लेयर क्या होता है कि एक ग्रीन लेयर का फॉर्मेशन होता है, इसका कार्बोनेट का, जो कि इसका फॉर्मेशन होता है उसमें CuCO3 रहते हैं, कॉपर कार्बोनेट और CuOS2, ठीक है। ये क्या होता है कि ये कॉपर के सरफेस पे फॉर्म हो जाता है, और ये जो लेयर कैसा होता है, ये ग्रीनिश लेयर होता है। मतलब कि आपके पास जैसे ये कॉपर का मेटल है और आपने क्या किया, इसे मॉइस्ट एयर में रख दिया, तो कॉपर का मेटल को जब आप मॉइस्ट एयर में रखते हैं तो क्या करता है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और क्या करेगा, मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करेगा। तो मॉइस्ट एयर में क्या होते हैं, CuCO3, मॉइस्ट एयर के कारण क्या होता है कि कॉपर का जो मेटल है उस पे CuCO3 एंड CuOS2 का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस फॉर्मेशन के कारण क्या होता है, हमारा जो कॉपर है वो कैसा हो जाता है, ग्रीनिश लेयर का हो जाता है, उस पर एक ग्रीनिश लेयर चढ़ जाता है, ठीक है। कंसिस्टिंग is formed on surface of is formed on surface of is formed on surface of copper when exposed in air, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ ग्रीन फिल्म ऑन द सरफेस ऑफ कॉपर, कॉपर पर ग्रीन फिल्म का फॉर्मेशन होना, ये भी क्या है, कोरोजन का एग्जांपल है। इसमें होता क्या है कि अगर हम किसी कॉपर को लेंगे, ठीक है, और उसे हम एयर में लॉन्ग टाइम तक के लिए रखेंगे, मॉइस्ट एयर में, तो होता क्या है कि उस जगह पे हमें CuCO3 एंड CuOS2 का कवर अप बन जाता है, ठीक है, लेयर बन जाता है, और इसके कारण जो है हमारा जो कॉपर है वो कैसा दिखता है, हमारा कॉपर जो है वो ग्रीन दिखता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या कंसीक्वेंस है, ठीक है, कोरोजन के क्या क्या कंसीक्वेंस होते हैं, हम अब इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। सो now we are going to talk about consequence of corrosion, ठीक है। कोरोजन के क्या क्या कॉन्सिक्वेंस होते हैं, ठीक है। पहली बात होती है कि लॉस ऑफ यूजफुल मेटलिक मटेरियल एज वेल एज मशीनरीज, लॉस ऑफ यूजफुलनेस मटेरियल as well as machineries, ओके। तो कॉपर के कारण भी क्या होता है ना कि कोरोजन के कारण क्या होता है, हमें इकोनॉमिकल लॉस भी होता है, ठीक है, और इन्वायरमेंटल लॉस भी होता है।
सबसे पहला है कि लॉस ऑफ यूजफुलनेस मेथड एज वेल एज मशीनरीज। एक तो हमें क्या किया, मशीन को भी खो दिया, मशीन की जो प्रॉपर्टी होती है उसको भी, मशीन के मेटल की प्रॉपर्टी को भी यूज करता है, और क्या करता है, मशीन की जो यूजफुलनेस है, जो काम है वो भी काम करना वो क्या कर देगा, बंद कर देगा। ठीक है, उसके बाद से फिर होगा ये क्या, अनप्रिडिक्टेबल मशीन फेलियर। ओके, अनप्रिडिक्टेबल machine failure, unpredictable machine failure, what it results to loss of life। जैसे कि अगर आप सपोज कर लीजिए कि अगर आप किसी फैक्ट्री में या कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, और उस जगह पे कोई वर्कर है जो किसी मशीन पे काम कर रहा है, ठीक है, और अचानक से क्या हो जाए कि मशीन कोरोड हो जाए, या फिर मशीन की कोरोजन के अचानक से क्या हो कि मशीन कोरोड हो रहा होगा, ठीक है, लेकिन अचानक से कोरोड होते होते एक समय ऐसा आ जाए कि मशीन अचानक से जो है वो क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो अचानक से अगर मशीन फेल हो जाए, जैसे अगर वो किसी पाइपलाइन में अगर काम कर रहा है, ठीक है, पाइपलाइन फैक्ट्री में या पाइपलाइन कंपनी में काम कर रहा है, और उस जगह पे अचानक से क्या हो जाए, पाइपलाइन फट जाए, तो अगर वो पाइपलाइन फट जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि वो स्थिति कितनी भयावह होगी। तो इससे क्या होगी कि लॉस ऑफ लाइफ भी हो सकता है। तो ये एक ऐसा रीजन है जिससे कि हमें क्या करना होगा, कोरोजन से हमें कभी कभी इस चीज़ों को देखना पड़ता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा कि अचानक से किसी पावर प्लांट में आग लग गए या ये लग गया होगा, इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, उसमें एक रीजन कोरोजन भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके कारण क्या हो सकता है, हम कह सकते हैं कि अनप्रेडिक्टेबल मशीन फेलियर रिजल्ट्स टू द लॉस ऑफ लाइफ। थर्ड हमारा क्या है, थर्ड है हमारा लीकेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस, मतलब जो क्या करते हैं, बर्न कर जाते हैं एयर में रिएक्ट करने पर। ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट करने पर क्या हो जाए, बर्न कर जाए। रिजल्ट्स ये लीकेज ऑफ इनफ्लेमेबल गैस फ्रॉम corroded pipe result to life hazard and leakage to toxic product and leakage to toxic प्रोडक्ट। ठीक है, अगर इनफ्लेमेबल गैस जो कि एयर में रिएक्ट करने पर मतलब वो गैस बर्न कर रहा है, अगर इनफ्लेमेबल गैस का लीकेज हो किसी कोरोडेड पाइप से, तो इसके कारण क्या हो सकता है, उसके कारण एक तो हमारा लाइफ हैजार्ड, लाइफ का प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, और दूसरा ये लीकेज टॉक्सिक प्रोडक्ट, और वो टॉक्सिक गैस रिलीज करेंगे। मतलब अगर किसी फैक्ट्री में ऐसा हो जाए तो एक तो वो फैक्ट्री में जो वर्कर है उनको तो ये परेशानी करेगा ही, उसके अलावा भी ये जो टॉक्सिक गैस अगर एनवायरमेंट में रिलीज हो गया तो इससे जो आसपास के लोग उससे भी ये फैक्टर कर सकते, उसको भी क्या कर सकता है, अफेक्ट कर सकता है। तो इसलिए हमें ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कोरोजन के टाइप्स को जानें कि कोरोजन किस तरह से होते हैं, कैसे होते हैं, और इस चैप्टर में हम ये भी जानें कि किस तरह से हम कोरोजन से अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, एक और जो रीजन है कोरोजन का वो क्या है, वह है कि ये मशीन की इफिशियंसी को क्या करता है, घटाने का काम करता है। Okay, so when we discuss in lubricant chapter, so we know that if the efficiency of machine decreases, then what happens and what we have to face to. But in this, we have to discuss about corrosion. So corrosion is also a main factor. Okay, corrosion also a main factor which decreases which decreases the efficiency of machine. Okay, so to prevent corrosion. So to prevent machine from corrosion, what we do, we use lubricant. Okay, so it is also a factor that we use lubricant in machine. So in lubricant, in chapter of lubricant, we can know about that what can corrosion affect or what will impact on machines. Okay, so our fourth point is that it leads to decrease in efficiency of machine. It leads to decrease in efficiency of
मशीन। ये क्या करता है कि मशीन की जो एफिशिएंसी जो होती है उसको क्या करता है, घटाने का काम करता है। सो इसलिए क्या होता है, इसलिए हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम क्या करें, तुरंत से तुरंत रिप्लेस करें कोरोडेड, जो मशीन का पार्ट कोरोडेड है उसको हम क्या करें, तुरंत से तुरंत रिप्लेस करें, ताकि हमें मशीन की क्या हो, एफिशिएंसी लॉस ना हो और वो प्रॉपर तरीके से क्या कर सके, काम कर सके, ताकि जो इसके एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में ज्यादा लॉस ना हो। ओके, एंड frequently replace and so frequently so replace the corroded part of machine. Okay, so due to which it adds cost to मेंटेनेंस। ठीक है, जैसे अगर कोई मशीन का पार्ट है, ठीक है, अगर कोई मशीन का पार्ट है तो वो क्या हो गया, वो करोड़ हो गया। तो जब वो करोड़ हो गया तो वो क्या करेगी, इसके एफिशिएंसी को घटाने का काम करेगी। तो हम क्या करेंगे कि जो मशीन का जो पार्ट है उसको करोड़ पार्ट को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो अगर आप उससे रिप्लेस करेंगे तो आपको क्या होगा, आपको जो है लॉस होगा, मेंटेनेंस में क्या होगा, लॉस होगा। ठीक है, मनी लॉस होगा। ठीक है, तो आप मेंटेन करने के लिए क्या होता है कि कोरोजन के कारण क्या होता है, आपको मेंटेनेंस लॉस की काफी प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। ठीक है, so we have to know, so these are the consequences of corrosion that we must have to know. But now we are going to talk about classification of corrosion, that how classification can be divided. In this we are going to talk about classification. Mainly there are two classification, that is dry corrosion and first we talk about dry corrosion and after that I will talk about later. First, क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन। अब हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कोरोजन के बारे में। तो कोरोजन की क्लासिफिकेशन के टर्म के बारे में बात करें तो मेनली हम यहाँ दो टाइप्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एक है हमारा ड्राई कोरोजन, जिसको कि हम एटमॉस्फेरिक कोरोजन के नाम से भी जानते हैं, एटमॉस्फेरिक कोरोजन और ड्राई कोरोजन। ठीक है, और दूसरा है हमारा, एक है हमारा एटमॉस्फेरिक कोरोजन और ड्राई कोरोजन। ठीक है, और दूसरा है हमारा इमर्स्ड कोरोजन। इसके दो तीन नाम हैं, इसलिए इमर्स्ड कोरोजन। एक तो आप इसे इमर्स्ड कोरोजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, या तो आपके सिलेबस में इमर्स्ड कोरोजन के नाम से होगा या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के नाम से भी इसे यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। ठीक है, इन दो टर्म के बारे में हम बात करते हैं आज। जैसे हम बात करें एटमॉस्फेरिक कोरोजन और ड्राई कोरोजन, ये क्या होता है। तो अगर आप किसी भी मेटल को अगर आप क्या करें, एक्सपोज करते हैं, एयर रख देते बहुत समय तक के लिए, तो आप ये देखते हैं कि मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, एटमॉस्फेरिक या फिर ड्राई कोरोजन के अंदर आता है। ड्राई कोरोजन होता क्या है कि बेसिकली इन्वायरमेंट में, आपके इन्वायरमेंट में जो भी गैसेस है, आपके इन्वायरमेंट में जो भी गैसेस है, अगर उन गैसेस के कांटेक्ट में आने के कारण अगर मेटल कोरोड हो जाए, अगर मेटल का क्या हो जाए, कोरोजन हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, एटमॉस्फेरिक कोरोजन। अभी हम पहले एटमॉस्फेरिक कोरोजन के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे इमर्स्ड कोरोजन या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन के बारे में। व्हाट इज एटमॉस्फेरिक कोरोजन। ठीक है, क्योंकि आप ये देखते हैं कि मेटल जनरली कोरोड कैसे होते हैं, तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो आपका हम मेटलिक कोरोजन के बारे में हम बात करेंगे, जैसे कि हमारा ड्राई कोरोजन क्या होता है, एटमॉस्फेरिक कोरोजन क्या होता है। एटमॉस्फेरिक जैसे कि नाम से पता चल रहा है, एटमॉस्फेरिक है ना, एटमॉस्फेयर से रिलेटेड, एटमॉस्फेयर से कैसे रिलेटेड है, तो जो मैंने आपको बताया अभी कि आप किसी भी मेटल के पीस को ले लीजिए और आप उसे एयर में रख दीजिए। ठीक है, तो अगर आप उसे एयर में रख देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको जो मेटल है उससे एक मेटल ऑक्साइड का लेयर फॉर्म हो जाता है। तो ये जो मेटल ऑक्साइड का लेयर फॉर्म होता है, यही आपका क्या है, एटमॉस्फेरिक कोरोजन। सो इट मे बी डिफाइंड एज ड्राई कोरोजन, एटमॉस्फेरिक कोरोजन और ड्राई कोरोजन। ड्राई कोरोजन, व्हाट इज इट? सो इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी defined as
Corrosion, it may be defined as corrosion due to gases, that is oxide gas, hydrogen sulfide gas, okay, oxygen oxide gas, hydrogen sulfide gas, sulfur dioxide gas, okay, and much more gases and much more gases which exist in our environment, okay, which exists in our environment and reacts with metal is known as dry corrosion. ड्राई corrosion बेसिकली क्या होता है कि जो भी गैसेस आपके एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रिएक्ट करते हैं मेटल के साथ, ठीक है, वो क्या करते हैं, मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं, और जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या करते हैं, मेटल सरफेस को कोरोड करने का काम करते हैं, और इससे ही हम क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक कोरोजन या फिर मेटलिक कोरोजन. It is so we can say that it is mainly due to direct contact of matter with the atmospheric gases present in our atmosphere. Okay, so dry corrosion is mainly of two types. Okay, dry corrosion is mainly of two types. First is oxidation corrosion, means corrosion due to oxygen, and corrosion due to other gases. Okay, and in this we have to talk. In this we will talk about later a new topic. Okay, so in this topic we will discuss that is this type of corrosion is useful or not. Mainly mainly when a metal reacts with oxygen or when a metal corrosion takes place, then when a metal is corroded in presence of oxygen gas, then such type of corrosion may be protective or may not be protective. So later we will discuss that when a metal corrosion is protective or when a metal corrosion is not protective. So first we will talk about oxidation corrosion. What is oxidation corrosion? So as the name suggests, oxidation corrosion, what does it mean? That metal is corroded in presence of oxygen. It means when oxygen reacts with metal atom and form a layer on metal surface, okay, such type of corrosion is known as oxidation corrosion. Okay, it is very important question. We need to define that what is oxidation corrosion, and after that we learn about its mechanism. Okay, so first now we are going to talk about oxidation. बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन कोरोजन की मैकेनिज्म कैसे होती है, कैसे किसी भी मेटल पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है. ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि ये है हमारा कोई भी मेटल एटम, ठीक है, ये है हमारा मेटल एटम, इट इज आवर मेटल एटम. ओके, क्या होगा कि ऑक्सीजन क्या होगा कि इसके पास आएगा. ठीक है, जब ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इसके पास आएंगे तो क्या होंगे कि ऑक्सीजन के जो एटम होंगे इस पे क्या होंगे, उस पे क्या होंगे, एब्जॉर्ब हो जाएंगे. ठीक है, तो जब ऑक्सीजन के एटम इस पर आकर के रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा, अटैक करेंगे, तो इस जगह पे क्या होगा कि इस पर आकर के चिपक जाएंगे ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में. ठीक है, अब क्या होगा कि मेटल एटम की क्या टेंडेंसी होती है, मेटल एटम हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, मतलब उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की. मेटल एटम की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की, और ऑक्सीजन जो होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेगा. तो मेटल इलेक्ट्रॉन देगा और ऑक्सीजन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा. तो इस तरह से क्या होगा, इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक रिलेशन स्टेबलाइज्ड हो जाएगा, और इसके कारण क्या होगा, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा. जैसे मैं बात करूं कि अगर आपके पास कोई मेटल एटम है, ठीक है, मान लेते हैं कि इस मेटल एटम ने क्या किया, इस मेटल एटम ने दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस करने का काम किया, लूज करने का काम किया. पहले मैं इसे समझा दे रहा हूं, उसके बाद मैं आपको वर्ड बाय वर्ड इस चीज को अच्छे से लिखवा दूंगा. तो आपने क्या किया कि आपके पास कोई भी मेटल एटम है, इस मेटल एटम ने क्या किया,
दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद क्या वो इस तरह से फॉर्म हो जाएगा Mn+, ठीक है। हम इस तरह से लिख सकते हैं कि इस मेटल एटम ने क्या किया, दो इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लूज करने का काम किया, ठीक है। ये एटम से आयन में कन्वर्ट हुआ, कैसे कन्वर्ट हुआ, दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके। अब उसके बाद क्या किया, आपके पास जो ऑक्सीजन एटम था, आपके पास क्या था, एक ऑक्सीजन एटम को हमने क्या किया, n/2 से हाफ ऑक्सीजन एटम है, मतलब एक ऑक्सीजन एटम, ठीक है। n/2 डिनोट करता है एक ऑक्सीजन एटम। तो इस एक ऑक्सीजन ने क्या किया, इस दो इलेक्ट्रॉन को लेने का काम किया, ठीक है। तो जब ये एक ऑक्सीजन एटम दो इलेक्ट्रॉन को लेने का काम करेगा तो क्या मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूं, NO2-, ठीक है। जैसा कि आपने क्या देखा कि सबसे पहले क्या किया कि मेटल एटम ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, कितने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, दो इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, ये मैंने लिख दिया। अब इस ऑक्सीजन एटम ने क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम किया, कितने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया। तो जब ये ऑक्सीजन एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या वो इस फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब जब और रिएक्शन के बारे में बात किए तो यहाँ पर दो n इलेक्ट्रॉन वो कट जाएंगे, ठीक है। और मैं क्या इस रिएक्शन को इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, 2m + n/2O2 वो किसके इक्वल होंगे, वो होंगे, आप देख सकते हैं इस पे भी दो पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, और इस पे दो नेगेटिव चार्ज हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्या करेंगे, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन कराएंगे, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं N2ON, ठीक है, N2ON, है ना। इस पे दो है इसलिए दो चार्ज चला गया N2ON, ठीक है। इस तरह से हमारा क्या बना, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन हुआ। और इस तरह से किसी भी मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। पहले क्या होता है कि अगर जैसे ये कोई मेटल एटम है तो इस जगह पे ऑक्सीजन एटम आएंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या करेगा, मेटल एटम ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, और इस तरह से मेटल और ऑक्सीजन आपस में क्या बनाएंगे, मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते जाएंगे। और ये N क्या है, हमारा कोई भी एलिमेंट है, ठीक है। जिस हिसाब से एलिमेंट होते जाएंगे उस तरह से N भी क्या होगा, डिफरेंट होते जाएगा, N की वैल्यू क्या होती जाएगी, डिफरेंट होते जाएगी। तो इस मैकेनिज्म को मैं आपको वर्ड बाय वर्ड भी लिखवा देता हूँ कि ओवर इस मैकेनिज्म में या इस पूरे प्रोसेस में हमने किया क्या है, ठीक है। First we are going to talk about that what is oxidation corrosion, okay. So first we have to talk about oxidation corrosion. What is oxidation corrosion? Oxidation corrosion and its mechanism. Oxidation corrosion and its mechanism. So first, what is oxidation corrosion? Oxidation corrosion takes place oxidation corrosion takes place by direct chemical action of oxygen, by direct chemical of oxygen, by direct chemical of oxygen, okay. That is metal atom reacts with ऑक्सीजन एटम। मेटल एटम क्या करता है, ऑक्सीजन एटम के साथ क्या करता है, रिएक्ट करता है। मेटल एटम ऑक्सीडेशन कॉरोजन क्या है, तो ऑक्सीडेशन कॉरोजन तब होता है जब हमारा क्या हो, जब हमारा ऑक्सीजन क्या करता है, डायरेक्टली केमिकली कंबाइन करता है मेटल के साथ। मतलब हमारा जो मेटल एटम है वो ऑक्सीजन एटम के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट करने का काम करता है, ठीक है। At low temperature, metal are slightly attacked. Metal are slightly attacked by oxygen atom.
slightly attacked by ऑक्सीजन एटम, ठीक है। बट ग्रुप वन मेटल like sodium, potassium, and AK, RB, CS, that are group 1 metal, okay, and group 2 are alkaline earth metal which reacts with oxygen or at readily and at ordinary temperature but attacked by oxygen. But group 1 metal like sodium, potassium, sodium, okay, and group 2, that is we call it as alkaline earth metal, okay, like Be, Mg, Ca, etc. Okay, these are the metal reacts with oxygen even at ordinary temperature, even at ordinary टेम्परेचर। देखिए ऑक्सीडेशन कोरोजन में होता क्या है कि ऑक्सीडेशन कोरोजन में हमारा मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड को फॉर्मेशन करते हैं। जनरली अगर हमारे पास टेम्परेचर लो हो, अगर हमारा टेम्परेचर लो हो तो मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करते, मतलब ऑक्सीजन मेटल के ऊपर स्लाइटली अटैक नहीं कर पाता है। लेकिन जो भी हमारे एल्कलाइन मेटल या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में इजीली आ जाते हैं अगर हमारा टेम्परेचर लो भी क्यों ना हो, मतलब वो मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन बहुत ही इजीली वे में कर पाते हैं, बहुत ही आसानी से वो कर पाते हैं, ठीक है। और इस तरह से हमारा वाटर ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। अब हम इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। तो मैकेनिज्म मैं आपको समझा चुका हूँ, बस मैं इसे आपको वर्ड बाय वर्ड लिखवा दे रहा हूँ। एट फर्स्ट क्या हुआ था, एट फर्स्ट स्टेप में हमारा मेटल एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का काम करता है। सेकेंड स्टेप में क्या करता है, जो मेटल एटम जो भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो ऑक्सीजन एटम क्या करता है, उस ऑक्सीजन एटम जो है उस इलेक्ट्रॉन को गेन करने का काम करता है, ठीक है। और थर्ड स्टेप में क्या होता है, जब हम रिएक्शन को कंबाइन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, तब हमें मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, ठीक है। बाय दिस वे द होल प्रोसेस टेक्स प्लेस, ओके। सो फर्स्ट एट फर्स्ट व्हाट हैपेंस, एट फर्स्ट मेटल एटम लूजेस इलेक्ट्रॉन। At first, we have not need to write mechanism. Mechanism of oxidation of metal. Or mechanism of oxidation process. What happens in first step? At first step, metal atom get oxidized. Get oxidized means loss of electron, that means loss of electron. Here we have metal atom H2n, okay, and this metal atom loses its electron. So what we have, okay. So in second step what happens, the electron loosed by the metal atom is gained by the oxygen atom, okay. So we can see that the electrons which are donated by metal atom is gained by oxygen atom, ऑक्सीजन एटम। वो क्या होता है, ऑक्सीजन एटम के द्वारा क्या हो जाता है, गेन कर लिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमें मिलता है n/2O2 plus gain of 2 electron. So as a result what we get
NO2 minus. Okay. So after that, what happens? Now the metal, our third step is that the metal ion, okay, the metal cation and oxide that acts as an ion combine to form metal oxide. Now further repeat it. Now metal cation, the metal cation, okay, our metal cation is Mn plus and oxide anion and oxide anion combine to form metal oxide. Combine to form metal oxide. That is the overall combination step reaction we have is that means, so I have realized it, but you have to properly see the last reaction that I write on this board. Okay, that means the last stage is that the overall reaction will be represented here. Overall reaction is that we have metal ion, okay, this metal ion loses electron, okay, and oxygen atom gains these two electron, and after gaining this electron we have NO2 minus. Due to this we have 2m plus half O2 and we have Mn plus NO2 minus. Okay, Mn plus NO2 minus. Okay, and we can also write this with N2ON. Okay, so this is the process of our dry mechanism. Also, this is the process of our mechanism of oxidation process. Okay, so now in next video we will discuss about the mechanism of other reaction. Okay, electrochemical reaction mechanism. So in this today we learn about the corrosion, consequence of corrosion, classification of corrosion, and dry corrosion. Okay.